1942 के 20 सितंबर के भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को स्मरण करते हुए असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में स्थित शहीद वेदी पर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित होकर ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं असम सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने 1942 के 20 सितंबर को देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मंत्री अशोक सिंघल के साथ ढेकियाजुली के वरिष्ठ समाजसेवी एवं समाज सुधारक रमेश चंद्र बोरा, ढेकियाजुली नगर पालिका के अध्यक्ष सुष्मिता दास, उपाध्यक्ष तुलिका सौकिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। असम से प्रशांत वैश्य की रिपोर्ट। आज 1942 सनत भारत त्याग आंदोलन সময়ত ঢেকিয়াজুলিত শহীদ হোৱা 13গৰাকী শহীদক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ ত্যাগ আৰু বলিদানৰ কথা আমি আজি সোঁৱৰিছোঁ। লগতে তেখেতৰ এই যিটো ত্যাগ আৰু বলিদান আমাক প্ৰেৰণা দিয়ে যে আই ভাতৃৰ স্বাৰ্থত আই অসমীৰ স্বাৰ্থত আমি সদায় সজাগ হৈ থাকিম আৰু ৰাইজৰ হকে কাম কৰি যাম। নমস্কাৰ। দেশবাসীৰ কাৰণে এইটো এটা অতি স্মৰণীয় দিন। 1942 চনৰ 8 আগষ্টৰ শেষ নিশা ভাৰত্যাগ প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে বম্বেত গোৱালিয়ৰ মৈদানত, আৰু তাৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ ভাৰতত পৰিছিল। আৰু গান্ধীজীয়ে যি বিচাৰিছিল যে নেতাসকল এতিয়া জেলত থাকিব লাগিব আৰু ৰাইজে নেতৃত্ব ল'ব লাগিব, আৰু গান্ধীজীৰ সেই কথাষাৰ আমাৰ ঢেকিয়াজুলিত সাৰ্থক হৈছিলে। সেই দিনটোত পূব ফালৰ পৰা অহা অজস্ৰ জনতাই ইয়াত ঢেকিয়াজুলিত পতাকা উত্তোলন কৰিলে। 13গৰাকী চৰকাৰী হিচাপত শ্বহীদ হ'ল, কিন্তু সৰ্বাধিনায়ক শান্তি সেনাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মতে সেইদিনা 24 জনৰ মৃত্যু হৈছিলে। আৰু তেজপুৰৰ পৰা এই আন্দোলন দমন কৰিবৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে পঠোৱা কেপ্টেইন ফিঞ্চৰ নেতৃত্বত যি কুকি আৰু নগা সৈন্যদল আহিছিলে, তেওঁলোকৰ পথ প্ৰদৰ্শক হৈ আহিছিলে হৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা বুলি এগৰাকী ব্যক্তি। তেখেতে প্ৰান্তিকত এটা প্ৰবন্ধ লিখিছিলে সেই দিনটোৰ সেই ঘটনাবোৰ লৈ, আৰু কৈছিল যে 17 জনৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু যেতিয়া মনবৰ নাথক গুলিয়াই পেলালে, ইয়াত তেখেতক পানী দিবৰ কাৰণে মায়াকেশৰ ঠাকুৰীয়া নামৰ এজন স্বেচ্ছাসেৱক গৈছিলে। পানী অকণমান মুখত দিয়াৰ কাৰণেই পুলিচে গোলা গোলকৈ পিটি লকাপত ভৰাই থৈছিলে, আৰু সেই লকাপৰ পৰাই তেওঁ দেখিছিলে যে এখন ট্ৰাকত বহুত মৃতদেহ উঠোৱা হৈছিলে। প্ৰকৃততে কিমান মানুহ মৰিছিল আৰু কিমান আহত হৈছিলে তাৰ সীমা সংখ্যা নাই। আজি 20 ছেপ্টেম্বৰ, স্কুল চলি আছে, কলেজ চলি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই, যিসকল আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত, এইবোৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগে। আগতে জিলা প্ৰশাসনে এই দিনটো বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছিল। এইটো কথা আকৌ এবাৰ চিন্তা কৰা উচিত। ধন্যবাদ। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। क्या आप चाहते हैं दुनिया में दिखना? क्या आप चाहते हैं कि आपका यूट्यूब और वेब पोर्टल की खबरों को टीवी पर दिखाना?
सही रास्ता नहीं मिलता, पैसे होते हैं बर्बाद, विज्ञापनों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता, सूचना विभाग आपको अहमियत नहीं देता। सभी समस्याओं का हल है हमारे पास। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है सभी यूट्यूबर और वेब पोर्टल के लिए सुनहरा मौका। सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड करके OTT और IPTV के माध्यम से अपने चैनल को ले जाएं सभी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी पर। आज ही संपर्क करें 9643761495 या व्हाट्सएप करें 8287399909 पर।